Hello students, now we will start the topic the inverse trigonometry function. Okay, generally you know in your plus 2 first year, okay, the trigonometry functions, there are 6 number of trigonometry functions: sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, sec theta and cosec theta. Similarly, there are 6 number of inverse trigonometry functions: sin inverse x, cos inverse x, tan inverse x, cot inverse x, sec inverse x and cosec inverse x. Okay, inverse trigonometry function, trigonometric functions. If sin theta equal to x, then theta equal to sin inverse x. So inverse तुम ए टाइप लिखे पड़ियो. Okay, so reverse also possible. Here theta is an angle. Okay, therefore sin theta is a number, therefore x is the number. If sin 30 degree equal to 1 by 2, therefore if sin 30 degree equal to 1 by 2, therefore 30 degree equal to sin inverse 1 by 2. Here 1 by 2 is the number. Okay, 30 degree is an angle. Okay, therefore here theta is an angle, that is sin inverse x. Okay, so sin inverse x is an angle. Similarly, if cos theta equal to x, then theta equal to cos inverse x. If tan theta equal to x, then theta equal to tan inverse x. If cot theta equal to x, then theta equal to cot inverse x. If sec theta equal to x, theta equal to sec inverse x. If cosec theta equal to x, and then theta equal to cosec inverse x. Therefore sin inverse x, cos inverse x, tan inverse x, sec inverse x, cosec inverse x, there are 6 trigonometry functions, 6 inverse trigonometry functions. So they are completely an angle. Okay, hence all the expressions sin inverse x, cos inverse x, tan inverse x, cot inverse x, sec inverse x and cosec inverse x are called the inverse trigonometry functions, called the inverse trigonometry function. Inverse trigonometric function, trigonometric functions, or inverse circular function, or inverse circular function, circular function. Okay, these are the inverse trigonometric functions or inverse circular functions. So there are 6 number. Okay, now we will discuss the domain and range of trigonometric functions. You know very well in plus 2 first year, domain and range of trigonometric functions: sin theta, cos theta, tan theta, sec theta, cosec theta. Okay,
Similarly, dominant range of inverse trigonometric functions also we will explain. Okay, now domain and range of trigonometry functions. ओके, ये सब हमको रिक्वायर्ड पड़ेगा डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। डोमेन और रेंज जानिया पे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रो डोमेन रेंज जानिया पे हमको आर दरकार पड़ेगा, आर रेंज गुडा दरकार पड़ेगा। देयरफॉर functions domain is the range. So first year को आइतल, okay, sin, cos, tan, cot, sec, cosec. Okay, this is the domain R -1 to 1 range. Cos here R -1 to 1 close bracket, both are close bracket. Okay, tan R exclude करें this value 12 plus 1 pi by 2 where n belongs to Z. Output as your real number R. Here R is the minus infinity to infinity, both are open bracket. R जहाँ minus infinity to infinity था. Okay, cot R minus n pi where n belongs to Z. First step को आइए, this is also real number R. Second करियो और R minus 2n plus 1 pi by 2 where n belongs to Z. Okay, so output asio minus into minus 1 union 1 to infinity. Here cosec R minus n pi domain where n belongs to Z. Output minus infinity to minus 1. This is called open row union 1 to infinity. Okay, हमारा domain means input value, range means output value. जहाँ तमें domain दबो output टा या show करेओ. Okay, so inverse trigonometric function रे हमारा ये सब value टा से नंबो, but output दला आड़ो ये सब दबनी किच्छु वाले दबो. Okay, cosec R minus n pi n belongs to Z minus infinity to minus infinity comma minus 1. This is the close bracket union 1 to infinity. 1 मध्य close bracket, infinity open bracket, minus infinity plus infinity always open bracket रहो. now I'm टिके explain करियो ना. हम कहतिले sin theta equal to x, then theta equal to sin inverse x. That means, so sin function तो हम explain करतिले r output आस्तिला -1 to 1. This is the domain, this is the range. Okay, here theta is an angle, so a real number को हम एंगल रे कन्वर्ट करछे. सो ये सब रेडियन फॉर्म में थाए, ताको रेडियन रे वैल्यू तुम एक्सप्रेस करो किबा और डिग्री रे एक्सप्रेस करो. ओके, कला परे आउटपुट से कोन आसी -1 to 1 sin फंक्शन. सो sin cos tan cot sec एंड cosec जे कोनसी एंगल उडा कि नेबे, बट आउटपुट द लाडो ये जो x देबे सब रियल नंबर हिते. ओके, नंबर हिते
बट साइन इनवर्स कौन कर जेकोसी इनपुट वैल्यू रियल नंबर गुड़ा नब देला कौन गोटे एंगल ही दब therefore sin inverse cos inverse tan inverse cot inverse sec inverse and cosec inverse ये सब कौन करी वैल्यू नेबे नंबर नेबे बट आउटपुट देला सब एंगल गुड़ा ही देबे ओके सो नाउ लिखियो ना domain and range of inverse trigonometric function inverse trigonometric functions okay functions domain this is the range okay sin inverse cos inverse tan inverse cot inverse sec inverse cosec inverse therefore sin function रो sin cos tan cot sec and cosec छोड़िया फंक्शन लिखिले डोमेन रेंज लिखछे सो sin रो रेंज देखो कोन थिला -1 to 1 ये sin इनवर्स कम करियो -1 to 1 डबल बट आउटपुट देला -π/2 to π/2 okay range is -π/2 to π/2 that is sin inverse function mapping करियो -1 to 1 to -1 to 1 -π/2 to π/2 okay cos inverse function करियो so -1 to 1 नबो बट आउटपुट देला 0 to π लिखा दो okay tan inverse कम करियो टोटल कंप्लीट r नबो बट आउटपुट देला -π/2 to π/2 open bracket okay here cot inverse also r नबो बट आउटपुट देला 0 π open bracket sec inverse कम करियो हमर रेंज देखो sec रो रेंज थिला ना union 1 to infinity okay but output देला sec the cos देला 0 to π अछि exclude करे π/2 टा exclude करे so prove करिया हमें okay उससे कम करियो -infinity to -1 union 1 to infinity but output आसला -π/2 to π/2 exclude 0 okay so a function रा एते डोमेन रेंज आकर लिखि परियो हमें लिखि पल्ला परे हमें किन मैपिंग मध्य कोड विधि करे देखिया so just लिखला परे माने this the function this the domain this is the range तो मैपिंग करियो so टाइप रो दबा ये तो इट इज अ फंक्शन so मैपिंग कला okay so these are the domains these are the range so this is sin inverse cos inverse tan inverse cot inverse sec inverse and cosec inverse okay इस बारे में प्रूव करिए okay हम जो रेंज जहाँ लिखते ले इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से सब आम तार प्रिंसिपल वैल्यू लिख मध्य भरा ओके प्रिंसिपल वैल्यू तार इंक्लूड हो ओके साइन रो कौन थिला r -1 to 1 sin inverse कौन करिए -1 to 1 आउटपुट -π/2 to π/2
principal value क्या होगा, the smallest value of inverse trigonometric function is called the principal value of inverse trigonometric function. So either it is positive or negative. Okay. Now आपको हम फोकस करिया साइन जेतला टोटल रियल नंबर नोथला आउटपुट -1 to 1 देता है. सो लेट sin थीटा को हमें x ले थीटा इक्वल टू sin इनवर्स x वाली पहले. Therefore we know -1 less than sin theta less than 1. So this is the range. Okay, sin function. Here to the sin this is the -π/2 value less than equal to sin theta less than equal to sin π/2. So sin कैसे रहा possible ही करिए. Okay. So sin -π/2 -1 sin of minus theta minus sin theta sin of minus theta equal to minus sin theta. ये हमारा फर्स्ट ईयर थिला क्वेल्स. ओके. सो sin theta मिलेगा ये sin π/2 है. हमें आपको एक्सप्रेस कर ले. सो ये sin कैंसिल हो गया. सो -π/2 less than theta less than π/2. Here theta equal to sin inverse x. माने इस sin inverse x रो range. Okay, there sin theta equal to x. This is the output. Okay ना, this is the output. Here output है माने x को मुझे theta equal to sin inverse x. So -1 less than or equal to sin theta less than or equal to 1. -1 less than or equal to sin theta less than or equal to 1. That is replacing वगैरह -1 less than x less than 1 or x कौन. So theta equal to sin inverse x. So x कौन होची ना एक भीतर ही हो. Here x is the domain, sin inverse x is the range. Here x टा कौन domain include हो. So domain ना कोड करती है इतना by the definition of sin function. Okay. Now हमें sin inverse x टा कोड करते हो देखिए. So इधर हम लिख करिए इधर जाएगा था. So convert कर दो sin रे, ये भी sin रे, ये भी sin रे. तो -π/2 less than theta less than π/2. Theta कोड़ा sin inverse x, so sin inverse x का range. Okay. Therefore range रे कोड कितना लगा -π/2 π/2. -π/2 π/2 माने ड्रॉ करिए ना. Here theta equal to 0, इधर theta equal to π/2. So ये पड़ा theta equal to -π/2. Okay. This is the anti-clockwise direction. This is the clockwise direction. Okay. So -π/2 π/2 3 इसका output टा दो. Okay. ये sin inverse function. और नेलार कौन होता है -1 to 1. Okay. So therefore the principal value sin inverse रो -π/2 π/2 3 रहे. Okay. बुझा पड़ची. Therefore sin theta equal to x, theta equal to sin inverse x. Here theta is a complete angle, sin theta is the number, x is the number. ये फर्स्ट ईयर में पढ़ती है. ये तो जोड़ा सेकंड ईयर theta equal to sin inverse x. X is a number, can it is sin theta is the number. Therefore x is the also a number. Therefore theta is an angle. Therefore sin inverse, cos inverse, tan inverse, sec inverse and cosec inverse. ये छह जो फंक्शन sin inverse, cos inverse, tan inverse, cot inverse, sec inverse and cosec inverse छह जो फंक्शन हम करिए. इनपुट ने लाडू नंबर नेबे बट आउटपुट जिकोने से उठे एंगल ही देबे. ओके. सो देयरफॉर आउटपुट है ठीक से जोड़ेंगे हमें और जे. ओके. सिमिलरली cos रा में लिख लें.